एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ सुनील, कि आज आप इतने जो देश के रिच लोग हैं, काफी इनमें से सेल्फ मेड हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कोई खैरात में लेके आए हैं। कई एम्प्लॉयज होंगे, सीईओज होंगे, सीएक्सओज होंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे, फैमिली ऑफिसेस तो खैर होंगे ही, बट उनके नेक्स्ट जनरेशन होंगे। ऐसी क्या 2-3 क्वालिटीज आप देखते हैं इन लोगों में? क्योंकि जो यंग दर्शक हैं हमारे, जो सब देख रहे हैं, जो फाइनेंस वेल्थ को सोचते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और इससे दूर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज मोर हियर, इजंट इट? तो ये जरा बताइए कि आपने इतने लोगों से आप मिले, उनके पैसे मैनेज किए आपने, आपकी टीम ने, पर आप मिलते जरूर होंगे उनसे, अपने क्लाइंट से, तो ऐसे क्या 2 या 3 ट्रेट्स है जो आपने देखे इन लोगों में? मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन and growing the wealth are two different aspects. Wealth creation is where you are working very hard, and sometimes you get money ahead of time, sometimes you get money on time, but how do you use that money to ensure that it also equally works hard for you so that you make returns out of it? Correct. I think the first thing what I found is, and the money can be historical money can be the CXO white collar money can be the early stage startups got lots of valuations and money can be from there. Money can be existing businesses are sold to the capital market, and money can have a very different characteristics. But ultimate truth is that every money should have a purpose. And that purpose is that what are we expecting out of that money to work for you, so that it doesn't remain over-allocated or under-allocated in a particular manner. Erstwhile days, it was very simple. You have money, go and buy a piece of land. Correct. Go buy gold. If not, put into bank deposits. Financialization of savings has actually made everybody think, and the size of the challenge and opportunity has significantly changed in the last 15 years. One has got 1 lakh and he has so many options today. One has got 1,000 crore, he has so many options today. The net, I think temperament in investment management is one of the biggest thing I found. That temperament. And वो temperament का मतलब ये है कि are you patient enough to pan out your investment thesis to get you to the best compounding machine which actually would serve your purpose of wealth growing. And for that, are you willing to allocate your money? हमें सबको गुलाब जाम बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर हम सिर्फ गुलाब जाम खाए तो वो खाना नहीं होता. खाना खाने के लिए पूरी थाली होनी चाहिए. सो वैसे ही आपकी वेल्थ को अगर आप समझ पाए कि कौन सी वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए है, कौन सी वेल्थ मिड टर्म के लिए है, कौन सी वेल्थ इज अ शॉर्ट टर्म वेल्थ, एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस, investing has become complicated. So getting somebody across to you and making you aware is not something you don't understand wealth. It is better to get more aware about what's happening in the market than feeling that, oh, why are you telling me I understand it better?